नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का तापी नर्सिंग एजुकेशन में। आज हम ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर 2019 का ओल्ड पेपर के एमसीक्यू सोल्व करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। स्लज मेथड एंड मैथ्यू डुकेन मेथड डिस्क्राइब। स्लज मेथड एंड मैथ्यू डुकेन मेथड क्या डिस्क्राइब करते हैं? मेथड ऑफ डिटेचमेंट ऑफ प्लेसेंटा, डिलीवरी ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट, वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द फिटस, वे टू मॉनिटर फिटल हार्ट रेट। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेथड ऑफ डिटेचमेंट ऑफ प्लेसेंटा। स्लज मेथड और मैथ्यू डुकेन मेथड प्लेसेंटा को कैसे सेपरेट करना है वो डिस्क्राइब करता है। स्लज मेथड में प्लेसेंटा को सेंटर से और मैथ्यू डुकेन मेथड में प्लेसेंटा के एड से सेपरेट करना है। ब्लीडिंग इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर विथ नो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और नो पेन एंड नो डायलिटेशन ऑफ सर्विस इंडिकेट। ऑप्शन ए, इनविटेबल अबॉर्शन, थ्रेटन अबॉर्शन, मिस अबॉर्शन या कंप्लीट अबॉर्शन। इनविटेबल अबॉर्शन में हेवी ब्लीडिंग होता है और सर्वाइकल डायलिटेशन होता है। थ्रेटन अबॉर्शन में मिनिमल ब्लीडिंग, नो सर्वाइकल डायलिटेशन और नो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। मिस अबॉर्शन में नो ब्लीडिंग और नॉन विएबल प्रेगनेंसी। कंप्लीट अबॉर्शन में मिनिमम ब्लीडिंग और सर्वाइकल डायलिटेशन होता है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, थ्रेटन अबॉर्शन। Which of the below is example of unintentional tort? Option A, assault, invasion of privacy, negligence या defamation। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नेग्लिजेंसी। The mode of inheritance of cystic fibrosis is option A, X-linked disease, autosomal dominant, autosomal recessive या नॉन मेंडेलियन। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑटोसोमल रिसेसिव। Repeated involuntary or intentional passage of feces a child in inappropriate places after the age when bowel control is normally accepted is called option A, night mares, option B, night sweat, एन्यूरेसिस या इकोप्रेसिस। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी, इकोप्रेसिस। एन्यूरेसिस का मतलब है यूरिन पे कंट्रोल नहीं रहता और इकोप्रेसिस का मतलब है स्टूल पे कंट्रोल नहीं रहता। इंटरमीडिएट क्लाउडिकेशन इज अ साइन ऑफ नर्व इंजुरी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन या आर्टेरियो ओक्लूसिव डिसीज। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी, आर्टेरियो ओक्लूसिव डिसीज। नेक्स्ट एमसीक्यू है, the type of assessment done to compare the client current status to previously obtained baseline data is called problem focused assessment, time lapse assessment, emergency assessment या initial assessment। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, टाइम लैप्स असेसमेंट। प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट, एक एग्जांपल समझिए। एक नर्स है, वो ड्यूटी पर आती है और पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुझे चेस्ट पेन है और नर्स तुरंत ही असेस करती है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम को। उसे हम प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट कहेंगे। टाइम लैप्स असेसमेंट, पेशेंट का करंट स्टेटस पहले दिए गए डेटा पर डिपेंड करता है, उसे हम टाइम लैप्स असेसमेंट कहेंगे। इमरजेंसी असेसमेंट, इमरजेंसी कंडीशन जैसे कि एयरवे, ब्रीदिंग जैसे असेस करना है, उसे हम इमरजेंसी असेसमेंट कहेंगे। इनिशियल असेसमेंट, मान लो कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आता है और शुरुआत से टोटली असेसमेंट करते हैं, उसे हम इनिशियल असेसमेंट कहते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ डेली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ इज डिसेबिलिटी एडजस्ट लाइफ ईयर, डिसीज अडेप्टेड लाइफ ईयर, डिसेबिलिटी अडेप्टेड लाइफ ईयर्स या डिसीज एडजस्टेड लाइफ ईयर। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर।
नेक्स्ट एमसीक्यू है, द अडम्स एप्पल इज फॉर्म बाय। अडम्स एप्पल किसका बना होता है? थायरॉइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज, हाइलोट बोन या एपिग्लोटाइटिस। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, थायरॉइड कार्टिलेज। अगला एमसीक्यू है, उस दस्तावेज को क्या कहा जाता है जो निश्चित परिस्थितियों में खास कार्यवाही को करने का अधिकार नर्सों को देता है जब कोई चिकित्सक उपलब्ध नहीं है? कॉन्सेप्ट मैप, स्थायी आदेश, पर्ची या छुट्टी देने का सारांश। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्थायी आदेश, स्टैंडिंग ऑर्डर। Which of the below is not function of the fibrous skeleton of the heart? Option A, conduct the impulses from atria to ventricles, forms a structural foundation for the heart valve, prevent overstretching of the valve, act a point of insertion for cardiac muscle fiber। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, conduct the impulses from atria to ventricle। In a normal average infant, the percentage increase in body length that a birth at the age of 1 year। 1 ईयर में हाइट कितना बढ़ना चाहिए? 10%, 75%, 50% या 20%। यहाँ पे राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, 50%। पुअर स्किन टर्गर इज नियोनेट एंड इन्फेंट इंडिकेट। पुअर स्किन टर्गर क्या इंडिकेट करता है? डिहाइड्रेशन, हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोकैल्सीमिया या हाइपरटोनिया। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, डिहाइड्रेशन। विच ऑफ द बिलो is the true statement about the edge zone of the sacromere? It is a devoid of thick or thin filament. It contains thick and thin filament lying side by side. It contains thin filament only. It contains thick filaments only। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी, इट कंटेन थिक फिलामेंट ओनली। The most common cause of retinal detachment is degenerative changes in the retinal vitreous, diabetes mellitus, ट्रोमा या ब्रेन ट्यूमर। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, डिजेनरेटिव चेंजेस इन द रेटिनल vitreous। Voluntary rejection or unacceptable thought or feeling from conscious awareness is called suppression, symbolization, sublimation या substitution। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, सप्रेशन। कॉन्शियस माइंड है, वो रिजेक्ट करना चाहता है अनएक्सेप्टेबल फीलिंग और थॉट को, इसे हम सप्रेशन कहेंगे। अगला एमसीक्यू है, द एक्शन ऑफ द सिंपैथिक सिस्टम इन द वॉल ऑफ एयरवे इज कॉल्ड bronchoconstriction, increase secretion, bronchodilation, increase gas exchange। यहाँ पे राइट आंसर है ब्रोंकोडाइलेटेशन। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसमें आएगा प्यूपिल डायलेटेड, सलाइवा इनिशिएटेड, एयरवे डायलेट, हार्ट रेट इंक्रीज, स्टमक इनिशिएट डाइजेशन, स्टमक को डाइजेस्ट को इनहिबिट करेगा, लीवर रिलीज ग्लूकोज, इंटेस्टाइन इनहिबिट डाइजेशन, किडनी रिलीज एडिनालिन, ब्लैडर रिलैक्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिक्रीज ब्लड फ्लो। ये सब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आएगा। अगला एमसीक्यू है, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड आइडिया और स्टेटमेंट इज कॉल्ड फिलोसॉफी, पैराडिज्म, थियोरी या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन
डी। When a person blood pressure drop, the kidney respond by, जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा तब किडनी क्या रिस्पॉन्ड करेगी? सिक्रेटिंग रेनिन, इंक्रीजिंग यूरिन आउटपुट, प्रोड्यूसिंग aldosterone, स्लोइंग द रिलीज ऑफ एडीएच। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिक्रेटिंग रेनिन। अगला सवाल है, एन अफेक्टिव अमोंग द फॉलोइंग इज बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, सोमाटोफॉर्म डिसऑर्डर या फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर। यहाँ पे राइट आंसर है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर में एक ही आदमी के अंदर दो अलग अलग कैरेक्टर प्रेजेंट होता है, एक होता है डिप्रेसिव और दूसरा है मैनिक। सिजोफ्रेनिया में ये एक साइकोटिक डिसऑर्डर है, उसमें आदमी एनवायरनमेंट में रियलिटी और इमेजिनेशन को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। सोमाटोफॉर्म डिसऑर्डर ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है, इसमें पेशेंट फील करता है कि मुझे बहुत गंभीर बीमारी है, लेकिन एक्चुअल में कोई भी ऑर्गेनिक कॉज नहीं होता। फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर, फोबिया का मतलब है डर, किसी को हाइट से डर लगता है तो किसी को आग से डर लगता है, उसे हम फोबिया कहेंगे। अगला सवाल है, पॉजिटिव ब्रूजेस्की एंड कर्नी साइन आर इंडिकेट ऑफ हेमिप्लेजिया, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मेनिंजाइटिस। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेनिंजाइटिस। The genetic exchange process in which donor DNA is introduced to recipient by a virus is transfection, transduction, conjugation या ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, ट्रांसडक्शन। स्क्रब टाइफस इज कॉज्ड बाय रिकेट्सिया प्रोवाजेकी, रिकेट्सिया अकारी, ओरिएंटिया सुगामुशी, रिकेट्सिया टाइफी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओरेंटिया सुगामुशी। The hormone that increase water reabsorption by inserting water or aquaporin is angiotensin, antidiuretic hormone, aldosterone, atrial natriuretic peptide। यहाँ पे राइट आंसर है एंटीडायरेटिक हार्मोन। The total number of fetal and early neonate death per 1000 live birth is called fetal death, intrauterine death, neonatal death, perinatal mortality। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी, पेरिनेटल मोर्टालिटी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, The term veracity in the context of nursing value refers to being faithful to agreement, telling the truth, being answerable for one's action, being fair and just। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, टेलिंग द ट्रूथ। The first referral level in the healthcare system is tertiary healthcare, primary healthcare, सेकेंडरी हेल्थ केयर या प्रीमोर्बिडियल हेल्थ केयर। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेकेंडरी हेल्थ केयर। फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स इन प्रेगनेंसी आर मेनली यूज्ड टू प्रिवेंशन ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, गेस्टेशनल डायबिटीज, एनीमिया इन मदर, एनीमिया इन फिटस। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, न्यूरल ट्यूब defect। A plane that passes through the midline of the body and divides into equal right and left side is called coronal plane, mid-sagittal plane, oblique plane या parasagittal plane। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, mid-sagittal plane। The surgical intervention for pain management
which involves cutting a nerve root to relieve pain is called cordotomy, radio frequency ablation, cryanalysia, rhizotomy. यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी, rhizotomy. The vertical transmission of disease occur through placenta, droplet, direct contact या mosquitoes. यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्लेसेंटा. विच ऑफ द बिलो इज अ कन्फर्म इंडिकेट ऑफ प्रेगनेंसी. कौन सा इंडिकेट है, कौन सी कंडीशन जो प्रेगनेंसी है वो इंडिकेट करता है. फिटल हार्ट इन अल्ट्रासोनोग्राफी, नोजी एंड वोमिटिंग, बीटा एचसीजी इन यूरिन, एमेनोरिया. राइट आंसर है ऑप्शन ए, fetal heart in ultrasonography. A rapid grower among the following is Mycobacterium gordonia, Mycobacterium abscessus, Mycobacterium avium, Mycobacterium bovius. यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, Mycobacterium abscessus. The causative agent for the disease Scrapie belongs to the category of prions, bacteria, viruses या protozoa. यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, prions. The cranial nerve affect a Bell palsy is cranial nerve 8, cranial nerve 7, cranial nerve 9, cranial nerve 5 और cranial nerve 3. यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, cranial nerve 7. Neuroleptic drugs are also known as antidepressant, hypnotics, antipsychotics या एंटी-इपिलेप्टिक्स. यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, एंटीसाइकोटिक्स. Introduction of solid food among with breastfeeding is called. 6 महीने के बाद सॉलिड फूड बच्चों को दिया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे. शेड्यूल्ड फीडिंग, कंडीशनल फीडिंग, डिमांड फीडिंग या कम्प्लीमेंट्री फीडिंग. यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी, कम्प्लीमेंट्री फीडिंग. According to Maslow hierarchy need to well through by oneself as well as other comes under physical need, self-esteem, security and safety need, self-awareness need. यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सेल्फ-इस्टीम. मास्लो हायरार्की नीड में बेसमेंट में फिजियोलॉजिकल नीड रहेगा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आएगा, लव एंड बिलोंगिंगनेस, सेल्फ इस्टीम और टॉप में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रहेगा. A cell that takes part in innate immunity by killing virus infected cell is neutrophils, T cell, NK cell, macrophages. यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, NK cell. When performing suctioning on the patient, you should oxygenate the patient lungs before and after suctioning procedure. Perform suction on the patient for longer than 10 seconds each time. Apply suction continuously while inserting the catheter. यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑक्सीजनेटेड द पेशेंट लंग्स बिफोर एंड आफ्टर सक्शनिंग प्रोसीजर. सक्शनिंग के दौरान, सक्शनिंग करते वक्त, सक्शनिंग के पहले और सक्शनिंग के बाद में हमें ऑक्सीजन देना है. रेस्पिरेटरी रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइटल वॉल्यूम गिव्स एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मिनट वॉल्यूम, मिनिमम वॉलंटरी वेंटिलेशन या टोटल लंग कैपेसिटी. यहाँ पे राइट आंसर रहेगा मिनट्स वॉल्यूम. रेस्पिरेटरी रेट को
टाइटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिनट वॉल्यूम मिलेगा। Which of the below does not help in controlling hazards in the school setting? इनमें से कौन सा है जो स्कूल नॉइजिंग में नहीं आएगा? हेल्थ एजुकेशन शुड बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम. Food supply to the student should be safe. The school should be built near from noise. The school should be well ventilated. यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी. The school should be built near from noise. The minimum invasion techniques by which thin insulated lead wire with electrode is surgically implanted in the brain is called function MRI, transcranial magnetic stimulation, electroconvulsive therapy, deep brain stimulation. यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, deep brain stimulation. The term resourcefulness implies problem solving ability, sense of belonging, involvement in spiritual activities, ability to handle stressful situation. यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी. नेगल्स रूल इज यूज टू कैलकुलेटेड. नेगल्स रूल्स किसके लिए? सर्वाइकल डायलेटेशन, एमनियोटिक फ्लूइड, गेस्टेशनल एज या एक्सेप्टेड डेट ऑफ डिलीवरी. नेगल्स रूल एक्सेप्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के लिए दिया गया है. राइट आंसर ऑप्शन डी. विच ऑफ द बिलो इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस. इनमें से कौन सा है जो सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए नहीं है? क्राइसिस स्टेबलाइजेशन, रिहेबिलिटेशन, स्क्रीनिंग, अर्ली डिटेक्शन. यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, रिहेबिलिटेशन. Lactation amenorrhea act a contraceptive method by spermicidal action, preventing implantation, preventing sperm entry, preventing ovulation. यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन. Bacillus cereus food poisoning is commonly associated with the consumption of green beans, fried rice, bucket potato, bottle honey. यहाँ पे राइट आंसर है फ्राइड राइस. Unattractive man select expensive stylish clothes to draw attention to himself. The defense mechanism is denial, compensation, dissociation, conversion. यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, compensation. Tropomyosin is the muscle fiber is contractile, anchoring, structural, regulatory. यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी, रेगुलेटरी. Pepsinogen in the stomach is secreted by globulate cell, G cell, parietal cell, chief cell. यहाँ पे राइट आंसर रहेगा chief cell, ऑप्शन डी. The normal order of events taking place during the second stage of labor. सेकंड स्टेज में कौन सी सीक्वेंस आएगी? ऑप्शन ए, डिसेंट, फ्लेक्शन, क्राउनिंग, एक्सटेंशन, इंटरनल रोटेशन. ऑप्शन बी, डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटेंशन, क्राउनिंग. ऑप्शन सी, डिसेंट, इंटरनल रोटेशन, क्राउनिंग, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन. ऑप्शन डी, डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, क्राउनिंग, एक्सटेंशन.
यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, क्राउनिंग एंड एक्सटेंशन. The organ that does not lie with the pelvic cavity. कौन सा organ pelvic cavity में नहीं आएगा? यूरिनरी, ब्लैडर, रेक्टम, ट्रांसवर्स कोलन, फेलोपियन ट्यूब. यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ट्रांसवर्स कोलन. The correct order of the phases in the bacterial growth curve is lag, exponential, decline, stationary. Option B, lag, exponential, stationary, decline. Option C, lag, decline, exponential, stationary. Lag, stationary, exponential, डिक्लाइन. यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, लेग, एक्सपोनेंशियल, स्टेशनरी एंड डिक्लाइन. विच ऑफ द बिलो इज अ मोर्टेलिटी इंडिकेटर? डिसेबिलिटी रेट, इंसिडेंस रेट, प्रिवेलेंस रेट, क्रूड डेथ रेट. ऑप्शन डी, crude death rate. The condition in which false beliefs are firmly maintained even though they are not shared by others is called delirium, hallucination, illusion, delusion. Right answer रहेगा option D, delusion. The genera that needs a pyridoxal for growth is Aerococcus, Enterococcus, Pedicocus, granulicatella. Option D, granulicatella. Which of the below is true with regard to pregnancy-induced hypertension? There is a rise BP before 20 weeks gestation. It is also called a gestational hypertension. Visual disturbance are always present. Proteinuria is always present. यहाँ पे राइट आंसर रहेगा it is also called a gestational hypertension. Depolarization in a nerve action potential is due to opening of sodium channel, opening of calcium channel, opening of potassium channel, closing of sodium channel. यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल. In a patient taking high dose if acetaminophen over the prolonged period of the parameter to be monitored regularly is, लंबे समय से एसिटामिनोफेन का ओवरडोज होता है तो क्या असेस करना चाहिए? जीआई इरिटेशन, किडनी फंक्शन, लीवर फंक्शन या प्रोथोपिन टाइम. यहाँ पे राइट आंसर रहेगा लीवर फंक्शन, ऑप्शन सी. Multiple sclerosis is characteristic by progressive demyelination in the CNS, impairment cerebral circulation, deficiency of the neurotransmitter dopamine, deterioration in the spinal column. यहाँ पे राइट आंसर रहेगा प्रोग्रेसिव डीमाइलिनेशन इन द CNS, ऑप्शन ए. Proton pump in a stomach is example of simple diffusion, facilitated diffusion, primary active transport, secondary active transport. यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. Where there is a possibility of locked twin being born. Option A, first twin has cephalic and the second twin has a beach presentation. Fraternal twins. Option C, first twin has bridge and the second twin has cephalic presentation. Dichorionic diamniotic twins. यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, फर्स्ट ट्विन हैज ब्रिज एंड द सेकंड ट्विन हैज cephalic presentation. The dimension of health concerned with proper biological function is called mental dimension, social dimension, spiritual dimension, physical dimension.
यहाँ पे राइट आंसर रहेगा फिजिकल डायमेंशन। द मीनिंग ऑफ रिमिशन इज द सिम्टम्स reappear, the severity of disease increase, the disease is present but the person does not express symptoms, the person is clinically cured। यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, द क्लिनिकल इज प्रेजेंट बट द पर्सन डज नॉट एक्सपीरियंस सिम्टम्स। द थर्ड फेज ऑफ बॉडी अडेप्टेशन टू स्ट्रेस इज रिएक्शन, रिबाउंड, एक्सेशन, रेजिस्टेंस। यहाँ पे राइट आंसर रहेगा एक्सेशन, ऑप्शन सी। एन इनमूवेबल जॉइंट इज कॉल्ड साइनोआर्थराइटिस, एम्फीआर्थराइटिस, पॉलीआर्थराइटिस, डायरार्थरोसिस। यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, साइनोआर्थराइटिस। The advantages of using three-part diagnostic statement such as problem, etiology, and symptoms format is: it decreases the cost of healthcare, it standardizes organization the client data, the improve communication between physician and nurse, it helps the nurses delegating। यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इट इज अ डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर। हेल्थ केयर का कॉस्ट कम करने के लिए ये यूज होता है। एयर ब्रोंकोग्राम इन एक्सरे इज इन द केस ऑफ सेप्सिस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ट्यूबरकुलोसिस, ब्रोंकोलिस्थमा। राइट आंसर रहेगा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ऑप्शन बी। अमंग द फॉलोइंग द बोन belonging to axial skeleton is hyaloid, tarsals, humerus, patella। ऑप्शन ए, hyaloid। A non-opioid analgesic of the below is option A, butorphanol, naproxen, buprenorphine, पेंटाजोसिन। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा नाप्रोक्सेन, ऑप्शन बी। In palpating the tragus and auricle causes pain in the problem is pharyngitis, otitis media, otitis externa, sinusitis। यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ओटाइटिस एक्सटर्ना, ऑप्शन सी। The anterior frontal is close by 2 to 3 years of age, at birth, 2 months, 9 to 18 months of age। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 9 to 18 months of age। न्यूबॉर्न मैच्योरिटी रेटिंग इज डन यूजिंग ब्लड स्कोर। ऑप्शन ए, ब्लड स्कोर, ऑप्शन बी, चैंडलर स्कोर, ऑप्शन सी, अपगर स्कोर, ऑप्शन डी, ओलिएंडर स्कोर। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ब्लड स्कोर। Which of the below is not a part of the nursing process planning? Return nursing intervention, formulating goal, desired outcomes, prioritizing problem diagnosis, supervising delegated care। यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सुपरवाइजिंग डेलीगेटेड केयर। The microorganism that is usually a part of the normal vaginal flora but can cause meningitis in newborn is Corynebacterium sepsis, Candida albicans, group B Streptococci, Staphylococcus epidermidis। यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ग्रुप बी स्टेप्टोकोकाई। The full form for gas in the context respond to stress is gas, GAS। गैस का फुल फॉर्म क्या है? जनरल अडेप्टेशन सिस्टम, जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, जनरल अलार्म सिग्नल्स, जनरल अलार्म सिंड्रोम। यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम। The test used
for the diagnosis of trichomoniasis is wet amount of vaginal fluid, enzyme link immunoassay test of serum, specific serologic test, ओवा एंड पैरासाइट फीकल स्मीयर। यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, वेट माउंट ऑफ वाजिनल फ्लूइड। द टर्म MRSA is bacteriology stand for methicillin reactive staphylococcus aureus, multi-drug resistance staphylococcus aureus, methicillin resistant staphylococcus aureus। ऑप्शन डी, methicillin resistant staphylococcus aureus। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, methicillin resistant staphylococcus aureus। Which of the below is not a sign of respiratory distress? Changing of posture to ease breathing, speaking complex sentence, nasal flaring, cyanosis। Option B, speaking complete sentence। An example of positive feedback mechanism in our body is temperature regulation, baroreceptor mechanism, oxytocin in thyroid childbirth, रेगुलेशन थायराइड हार्मोन। यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ऑक्सीटोसिन इन दी थायराइड चाइल्डबर्थ। फाइन downy hair normally found abundant in premature babies is called caput, vernix, navy, lenub। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, lenub। The professional value of nursing that describe the right to self-determination is called altruism, autonomy, dignity, integrity। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, autonomy। The causative agent for bacterial vaginosis is Candida albicans, Chlamydia, Trachomatis, herpes simplex, Gardnerella vaginalis। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ड्यूरिंग द एज ऑफ 1 to 3 years, the development stage according to the Freud theory is genital, anal, oral, phallic। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, एनल। सीडो हाई आर्सेनिन, अस्परजिलस, म्यूकस, कैंडिडा, पेनिसिलम। यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कैंडिडा। The group at the increased risk for herpes zoster is pregnant woman, infant with congenital infection, person at advanced age, patient with atopic dermatitis। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पर्सन एट एडवांस एज। The relative risk of a disease can be obtained from experimental study, case control study, case study, cohort study। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कोहॉर्ट स्टडी। Which of the below is not a component of HELP syndrome? Hemolysis, elevated liver enzyme, bleeding per vaginum, लो प्लेटलेट काउंट। यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ब्लीडिंग पर वजाइनम। A mental illness specific to certain population where there is a severe anxiety and hypochondriacally concern is called that nervous amok rootworm। यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, that। The type of hypersensitivity reaction due to IgE mediated histamine release is called type 1, type 2, type 4, type 3। यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, टाइप 1। A scale that cannot be used to assess a subject for the mood disorder। इनमें से कौन सा सब्जेक्ट है वो यूज नहीं होता।
बेग इन्वेंटरी, एडिनबर्ग इन्वेंटरी, वेकफील्ड क्वेश्चनरीज, हैमिल्टन रेटिंग स्केल। यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, एडिनबर्ग इन्वेंटरी। विच ऑफ द बिलो इज नॉट अ रोल प्ले बाय नर्स? इनमें से कौन सा रोल नर्स का नहीं है? फिजिशियन, केयर गिवर, काउंसिलर, कम्युनिकेटर। यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, फिजिशियन। अगला एमसीक्यू है, अमंग द फॉलोइंग द टास्क डज नॉट रिक्वायर अ रजिस्टर्ड नर्स बट कैन बी डेलीगेटेड टू द होम हेल्थ एडीज, assessing wound healing process, adjusting oxygen flow, teaching the client about medication, feeding and bathing the client। राइट आंसर रहेगा फीडिंग एंड बाथिंग द क्लाइंट। विच इज नॉट अ हाई रिस्क फॉर माइट अफेक्ट वर्कर अ कंस्ट्रक्शन कंपनी? एलर्जिक डिसीज, ट्रॉमेटिक इंजुरीज, चेस्ट डिसीज या माल न्यूट्रिशन। यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, माल न्यूट्रिशन। The test that most specific for myocardial damage is creatine kinase, myoglobin, CKMB, troponin I। यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ट्रोपोनिन आई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट assimilated by eukaryotic cell? सल्फेट, ग्लूकोज, नाइट्रोजन, लैक्टेट। यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। In the diagnostic statement, excessive fluid volume related to decreased venous return as manifested by lower extremity edema swelling. The etiology of the problem is idiopathic, excessive fluid volume, edema, decreased venous return। यहाँ पर राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, डिक्रीज वेनस रिटर्न। Microcephaly is diagnosed when head circumference is less than 4 standard deviation, 2 standard deviation, 1 standard deviation, 3 standard deviation। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 3 standard deviation। What is the capital of Manipur? इम्फाल, ईटानगर, कोहिमा, देशपुर। यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इम्फाल। आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और आपको ये सीरीज पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।